जाऊंगी भमाला स्तूपा, एक और बुद्धिस्ट relic. I'll have to take a boat across the Khanpur lake to get there. After seeing all of this, मुझे यकीन है कि अगर इस जगह को प्रॉपर एडवर्टाइज किया जाए तो काफी फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आ सकता है. Something that I've always found very hard to do as a photographer is to get the essence of a historic site in my pictures. वो बहुत ही मुश्किल होता है. They look amazing when you're there. When you're out there, you can touch them, you can feel their texture, you can actually sense how majestic they must have been in their time. लेकिन अपने pictures में लाना ये कैसे होगा? The technique which I usually use is I walk around. मैं उस जगह को पूरी तरह से absorb कर लेती हूँ. One of the hardest things to do when you're photographing relics is where do you begin from? How do you capture the beauty, the essence of that place in a photograph? मेरी जो टेक्निक है, मैं जो अमूमन करती हूँ, I step back, I take a deep breath and I take it all in. जब आपकी फोटोग्राफी आपको पानी के करीब ले आए, तो it is very important that you don't leave sunblock behind. एक टेक्निक जो लैंडस्केप फोटोग्राफी में आप यूज कर सकते हैं वो है रूल ऑफ थर्ड्स. रूल ऑफ थर्ड्स में ये होता है, जस्ट इमेजिन दैट योर फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 9 स्क्वायर्स. जब आपकी फोटोग्राफी आपको पानी के करीब ले आए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट लीव सनब्लॉक बिहाइंड. रूल ऑफ थर्ड, जिसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है, वो अपने फोटोग्राफ्स में अप्लाई करना मत भूलिए. इट मेक्स योर पिक्चर्स ऑल टुगेदर फार मोर इंटरेस्टिंग. जब आप हिस्टोरिक साइट्स की फोटोग्राफी करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नोट वेयर द सनलाइट इज फॉलिंग. कभी कभी सनलाइट ऐसी खूबसूरत वांटेज पॉइंट पर गिरती है कि उसकी पिक्चर लुक्स फैबुलस. नोट व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द मोस्ट इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट्स. दैट इज व्हेन यू टेक अ पिक्चर. अमूमन बेहतर यही होता है कि आप मॉन्यूमेंट्स की फोटोग्राफी डल और क्लाउडी डेज पे ना करें. The boat ride was amazing. It took nearly 20 minutes on that ice-cold water. I felt it, and it was something else. The sun overhead and its reflection in the water made for fantastic photographs. Unfortunately, thanks to the noise of the boat, I couldn't concentrate much, so I wasn't really focusing on taking pictures. I just wanted to get to Bhamala. The Bhamala Monastery and stupa dates to the 4th or 5th century AD, and it lies at the very head of the lake. The environment here has a unique magic of its own. Standing under the tree, I can feel the cool breeze from the lake, the lush green mountains on one side, and the stupa right behind me. I think it's time to explore. Unfortunately, यहाँ कोई गाइड नहीं है मुझे इस एरिया की हिस्ट्री बताने के लिए. So I'll take advantage of the situation and climb atop the stupa. Although ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इजाज़त भी है ये करने के लिए, लेकिन मैं इस जगह को अपने कैमरे की लेंस की नज़र से देखना चाहती हूँ. A panorama would be amazing here. कहा जाता है that there used to be a dome-like structure at its summit, जो अभी नहीं है. यहाँ 2 गाय भी हैं जो मुझे अटैक करना चाहती हैं. It was tough going up, but it was even tougher coming down. Since the main stupa is in ruins, I had no support. तो नीचे आना बहुत मुश्किल था. The main stupa is unique of its kind.
Its foundation is on a cross and it has steps on 4 sides. The statues found at this site have since been transferred to the Taxila Museum. Unfortunately, Taxila के बाकी कदीमी साइट्स की तरह बमाला को भी सेंट्रल एशियन हंस ने तबाह कर दिया था। यहाँ कोरिंथियन पिलर्स भी पाए जाते हैं। भमाला स्टूपा की एक और खासियत ये है कि ये क्रॉस बेस पे मौजूद है। Most other Gandharan stupas एक सर्कुलर बेस पे बनाए गए हैं। मैक्रो फोटोग्राफी में जो लेवल ऑफ डिटेल है वो आपको लाजवाब कर देती है। मैंने अपना मैक्रो लेंस भमाला में भी ट्राई किया एंड ओह माय गॉड, द लेवल ऑफ डिटेल जो फोटोग्राफ में निकली बाद में, अमेजिंग। टेराकोटा की टाइल्स जो यहाँ उस ज़माने में यूज़ होती थी, उसकी अभी टेक्सचर जो हाथ से मुझे फील हुआ था वो ही पिक्चर्स में आई। Those macro photographs are just out of this world. If you're photographing indoors, make sure you have permission to do so. My personal space or photographer space is very important for the kind of photography I do. Since मैंने मैक्रो फोटोग्राफ्स लेनी होती हैं, उनमें फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। Unlike photojournalism, in which you can take amazing shots while in the midst of crowds and crowds of people, मैक्रो फोटोग्राफी के लिए आपको क्वाइट, सुकून और फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। Monuments are timeless, and they make superb subjects for your camera if you take care of some of the basics. मैं अपनी पिक्चर कंपोज करने से पहले ही उस जगह को असेस कर लेती हूँ और अपनी आंखों से देखती हूँ व्हाट वुड मेक द बेस्ट फोटोग्राफ। मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप जब भी फोटोग्राफी करो अपनी आंखों से फ्रेम करना, व्यू फाइंडर से नहीं। फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ लॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट विद जूम, एक्सपेरिमेंट विद मैक्रो एंड एक्सपेरिमेंट विद वाइड एंगल शॉट्स। एक्सपेरिमेंट ऑल्सो विद द सनलाइट। देखें शैडोज कहाँ आती हैं, will that make a great picture? Click. Don't be afraid to click and don't be afraid to try. Try taking panoramas to capture the entire scene. ये जगह इतनी खूबसूरत है, वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा, मगर शाम ढल चुकी है और लौटना भी है। I'll be looking forward to your suggestions and your thoughts. Our Facebook pages. You can also follow us on Twitter at Share with us your clicks on Natasha Clicks.